as a face of the party in Haryana, a senior leader of the Congress, you would expect your name to be one of those names you put it to be correct. considered for chief minister if the Congress wins. Congress will win, and you put it correctly. Despite the fact that you have not contested the assembly elections, you should be considered as a contender for the post of chief minister. Yes? What's wrong with that? ये जो स्माइल है आपकी शक्ल पे, ये क्या मुझे 8 तारीख को भी देखने को मिलेगी? I'm not walking that path. What you're saying of negativity, ये मिलेगा नहीं मिलेगा. I'm an optimist. So you still believe that on the 8th evening, you could be the chief minister of Haryana? See, that is for the high command to see. What do you who feel? All are there. So I'm also there. वो 13 दिन जब आप कैंपेन में नहीं थी, how would you describe your mood? इतना बताइए, 1 साल हो गया है, 2 साल हो गए हैं, 2019 से अब के बीच में भूपिंदर हुड्डा जी से कितनी बारी आपकी बातचीत हुई? Candidate selection, ticket distribution. There's a perception that Hooda ji was given a dominant role in that कि 70 टिकट्स पे उनकी मर्जी चली, बाकी पे आपकी मर्जी चली. जिन लोगों के हाथ में ये सब था, जो कर रहे थे, आई थिंक उनमें भी थोड़ी ये कमी आई कि जो आपस में एक शेयरिंग होनी चाहिए आइडियाज की, या उस समय बैठकर जो आपस में बातचीत करके फैसले होते हैं, वो एक मेजर कमी थी. वो कमी किसकी? Who's responsible? किसकी तरफ से? अब देखो, मैंने बता दिया. Was it from Hooda ji? Was it from the Gandhis? This interview cannot be like an interrogation. You have smiled through many of my very provocative questions. And you have smiled through this period when you have felt disappointed. Yeah. What keeps you smiling? I take it in my stride, you know. And हरियाणा में हमारे कहते हैं, जब ओखली में सिर दे दिया तो फिर मुसलों से क्या डरना है. तो अब ठीक है, मुसल पड़ते हैं, पढ़ेंगे, but at some point we have to give it back as good as we get, and that I'm saying as a woman. एक तस्वीर है, और वो तस्वीर पिछले कुछ दिनों से हेडलाइंस में छाई हुई है. इन दैट पिक्चर वी कैन सी राहुल गांधी इन द सेंटर. उनकी एक तरफ है भूपिंदर हुड्डा जी, और दूसरी तरफ है आप, और आपकी एक तरफ है प्रियंका गांधी, और आप सब हाथ पकड़े एक यूनिटी की तस्वीर दिखा रहे हैं. जब आप और हुड्डा जी उस स्टेज पर इकट्ठे आए, तो आप कितने दिन, हफ्ते, महीने या सालों के बाद भूपिंदर हुड्डा जी के साथ उस स्टेज पे थे? नहीं, ऐसे तो मिलते रहे हैं, पीछे हमारी मीटिंग्स भी हुई हैं. पीछे मीन्स कितने पीछे? इसी चुनाव में मीटिंग्स भी हुई हैं, और चुनाव में मीन्स चुनाव से पहले जो पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, तो उसमें मिलते हैं, ऐसी बात नहीं. 1-on-1 कब बातचीत हुई? 1-on-1 में तो कुछ समय हो गया. How would you define कुछ समय? Is it in months, days, years? Well, it can be anything. It can be anything. Help us here. It can be anything. We want to be accurate. You see, well, we don't really have to be. Election day is tomorrow, so let's not get into such nitty-gritties. No, but honestly, it is no secret that you haven't had a good relationship with him, that Rahul Gandhi had to sort of play that bridge. When you were standing on that stage and thinking, what were you thinking? No, see, my first thought is always for the party. It always has been, and it will be. So we are there to see that the party wins, we win a majority, and the candidates win. That was the sole purpose why all of us had gone there. Yeah. Rahul ji had come for campaign. Before that also, I may remind you, when he had come for his yatra, that time also all of us were there together. So where party matters are concerned, I don't think there's an issue like that. But when you say कि कुछ समय हो गया है भूपिंदर जी के साथ बात किए हुए, वो कुछ समय कितना समय है? वो तो कुछ भी हो सकता है. थोड़ी तो मदद कीजिए ना. कुछ भी हो सकता है. थोड़ी तो मदद कीजिए ना. थोड़ी तो मदद कीजिए. That's okay. That's all right.
That's all right, means you don't want to Yeah. tell us how long it's been since Yeah. you've not spoken. Yeah. Yes. वो कहते ना कहते कह ही दिए आप. इतना बताइए, 1 साल हो गया है, 2 साल हो अब गए हैं, छोड़िए इन चीजों को। 2019 से अब के बीच में भूपिंदर हुडा जी से कितनी बारी आपकी बातचीत हुई? मीटिंग्स में कुछ समय मिलते रहे, ऐसा नहीं है. ग्रुप मीटिंग्स, हाँ, ग्रुप मीटिंग्स. कभी अकेले मुलाकात, फोन पे कोई अकेले बातचीत? हाँ, फोन पे भी कभी कभार हो जाती थी, तो कोई इतनी आई डोंट थिंक दैट्स रियली एन इश्यू, यू नो, क्योंकि बहुत लोगों से हो भी जाती है, नहीं भी होती, बट वी ऑल पार्ट ऑफ द सेम पार्टी एंड सेम दिस थिंग, सो आई डोंट थिंक दिस इज सच अ बिग इश्यू. Let me tell you what the issue is. The issue is that in such an important election, such an important face like yourself, अब हरियाणा में कांग्रेस के 3 ही लीडर हैं. आप हैं, भूपिंदर हुडा जी हैं और उनके बेटे हैं. 3 पहचान वाले लीडर हैं. उन 3 में से एक लीडर कैंपेन पे नहीं जाती 13 दिन तक. आपकी हेडलाइन में नाम बन जाता है सल्किंग सेल्जा. I don't sulk. I know. I've known you for many years. You're not a Yeah, sulker, you're a fighter. So you were Uh, fighting, not sulking. But you were angry. well, whatever it was, I was here. I was in my office. Everything, दरवाजे खुले थे, लोग आ रहे थे, मिल रहे थे, तो और ऐसा आप कैंपेन में नहीं थी. कैंपेन में शुरू में नहीं थी. क्या हुआ? बाद में आए. Was it a गुस्सा over candidate selection? Was it a गुस्सा कि आपको कंटेस्ट नहीं करने दिया और दीपक जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनाव में नहीं आएंगे? आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी सीरियस मैटर कि दीपक जी ने क्या बोला, क्योंकि वो जो दूसरे बड़े नेता उस समय कमेटी में थे, वो सब कह देते थे कि नहीं, उनकी ओर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही बोल देते हैं. अच्छा. और उनको कहा भी गया. You were asked not to take Mr. Bavaria seriously. Yeah. So you didn't take him seriously. No. Because आपको पता है, वो काफी समय से आप भी उन्हें देख रहे हैं, तो इतनी कोई ऐसी बात थी नहीं. इतना सीरियस मैटर को लेने की कोई बात भी नहीं थी. क्यों हम इसको ऐसे तरजीह दें कि ऐसी बात, इस बात से नाराज, इस बात से खफा हो गए, ये वो, ऐसा नहीं था. ऐसा नहीं. वो 13 दिन जब आप कैंपेन में नहीं थी, how would you describe your mood? I'll give you some words to help you. Was it angry? Was it disappointed? Was it cynical? डिसअपॉइंटमेंट. Okay. डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ी निराशा तो देखो होती है, स्वाभाविक बात है. जिस पार्टी का हिस्सा हम हैं और रहे हैं और रहेंगे, उस पार्टी में कई बार देखो सारी चीजें आपकी मर्जी से नहीं हो सकती, और ना कभी हुई हैं, ना हो सकती हैं. एवरीबडी, सबको साथ लेकर चलने का एक माहौल होता है, सब कुछ करते हैं हम. तो थोड़ी कमी रही इस बार, इसलिए थोड़ी निराशा तो हुई. पर अब पार्टी में है तो निकलना तो है, पार्टी के लिए जाना. निराशा इस बात से थी कि आपको चुनाव के मैदान में आने नहीं दिया, कि निराशा इस बात से थी कि और भी बातें थी. कैंडिडेट सिलेक्शन, सिर्फ अपनी बात नहीं हो सकती. कैंडिडेट सिलेक्शन की बात करते हैं. केवल हम, मतलब इतना वो भी नहीं है, अपनी बात तो एक सीमित हो जाती है. कई चीजें होती हैं जो जुड़ जाती हैं. तो लेकिन ऐसी बात इतनी भी नहीं है कि पार्टी से इतना ज्यादा हम खफा हो जाएं. अब पार्टी में तो है ना, तो पार्टी में निकलना तो है. तो नहीं, मैं खट्टर साहब की बात नहीं कर रही कि बहन सेल्जा आओ बीजेपी में आओ. No, that is something that I don't think anyone took it seriously. Anyone, whether in party or outside, or even I would say उनकी पार्टी को भी पता होना चाहिए. But you have been on record saying that you're not happy with ticket distribution, candidate selection. Did you, जो आपने ये word use किया, you were अभी disappointed. कहा है मैंने. हाँ. केवल आपको कहा है. दोबारा थोड़ा दोबारा विस्तार से कहिए. नहीं, जो आपने पूछा ना, उसके जवाब में मैंने ऐसा कहा कि ये कुछ फैक्टर्स. जी, मैं ये बोल रही हूँ कि कैंडिडेट सिलेक्शन, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज अ परसेप्शन दैट हुड्डा जी वाज गिवन अ डोमिनेंट रोल इन दैट, कि 70 टिकट्स पे उनकी मर्जी चली, बाकी पे आपकी मर्जी चली, एंड यू वर डिसअपॉइंटेड विद दैट अ लॉट. क्योंकि आपके भी अपने लोग हैं, अपने फॉलोअर्स हैं. देयर आर पीपल कमिंग टू यू एंड सेइंग, let me just give you my perspective on that. Okay.
बात नंबर्स की नहीं होती, और इतना भी नहीं होता कि भाई जो एक है वो आपका है या उसका है उसका है। बात ये है कि पार्टी में जो उस समय लोग जो मैनेज कर रहे थे, जरूरी नहीं है जो आप जिसका नाम दे रहे हो उससे मैं एकदम आपका हो गया और मैं कहूँ कि ये गलत है जस्ट बिकॉज आपने नाम दिया है कि इतने नाम इसके हो गए या इतने, ऐसा नहीं होता है पार्टी में। इतना डिवीजन ऐसे ना होता है, ना होना चाहिए, ना हो सकता है। बेसिकली व्हाट आई फील इज कि जो डायलॉग एक होना चाहिए या पहले होता था, लीडर्स का आपस में बैठते थे, यू मे अग्री यू मे डिसएग्री, लेकिन आपको मालूम है क्या हो रहा है। लेकिन अभी जिन लोगों के हाथ में ये सब था जो कर रहे थे, आई थिंक उनमें भी थोड़ी ये कमी आई कि जो आपस में एक शेयरिंग होनी चाहिए आइडियाज की, या उस समय बैठकर जो आपस में बातचीत करके फैसले होते हैं, वो एक मेजर कमी थी। वो कमी किसकी, who's responsible, किसकी तरफ से? अब देखो मैंने was बता दिया। was it from Hooda ji, was it from the Gandhis? This interview cannot be like an interrogation. I've known you too long to interrogate you. I know this is a political thing, and I will say only as much as I want to say. That's fair, Yeah. but it's my job to ask the questions. You ask, है you ना? ask. तो मैं तो कोशिश करूंगी. The interview should not deteriorate. Not at all. You know. Not at all. But I'm not going to say anything. Okay. That shows that I'm not like that because I'm a party person. इतना और ऐसा कुछ कहना कोई समझदारी भी नहीं होती कि हम पब्लिक में कुछ ऐसी बातें करें या बताएं या कुछ। पार्टी के कई चीजें होती हैं जो पार्टी के अंदर ही रहती हैं और अंदर रहनी चाहिए। Fair enough, पर आपने कहा betterment and for आपस में एक चीज होती है। अब अंदर हम कितना ही कुछ करें और हमेशा होता रहा है, ये नहीं है कि आज कुछ बात हुई है, हमेशा होता रहा है और पार्टी में होता, any organization has these characteristics. So, but as a responsible person, fairly senior, I don't think that I can divulge much more than what I should. At least divulge this, because everyone knows it, that you were keen to contest. That's right. That's yeah, right. The assembly elections. Yes, that's right. Hence I asked you कि जब प्रभारी एक मंच से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कह देता है कि कोई एमपी कंटेस्ट नहीं करेगा, तो गुस्सा तो आया होगा ना? मैं उसी के जवाब में आपको I just shared with you that I was informed कि ऐसा कुछ नहीं है. And don't take him seriously. Yeah. But kind of, in a way. Those are your words. Okay, those are my words. But eventually, you did not contest. Yeah. Right? Right. And you wanted to. Right. It's not a hidden fact. So now what? But that's okay. That's okay. I just wish that communication was better. ये जो interpretation हुआ है of your not contesting, the interpretation is this means Selja is not in the race to be chief minister. Well, that's your interpretation. And even the word race, it's more of a journalese, you know. Kumari Selja is not a contender for chief minister because she hasn't contested the assembly election. It can be your interpretation. What is your interpretation? I have never believed in being a contender or being in the race, but I feel that when such issues are discussed, there are few leaders who have to be discussed. And as a face, by the party. And as a face of the party in Haryana, a senior leader of the Congress, you would expect your name to be one of those names you put it to be considered for chief minister if the Congress wins. Congress will win, and you put it correctly. Can I summarize it so that there are no... You put it... No, I'm saying it. You put it What I like about you is you're very blunt. आप जो मन में होता है आप बोल देती हैं. हाँ, थोड़े आपने ठीक बोल दिया. I don't have a problem with आप ये बोल रही हैं as one of the senior major leaders of the Congress in Haryana. Despite the fact that you have not contested the assembly elections, if the Congress wins, which you say the Congress will win, you should be considered as a contender for the post of chief minister. Yes? What's wrong with that? Nothing. Just confirming.
आपने बोला ठीक है. I said I'm not disputing what you're saying. Okay. There's also this talk of the Dalit vote. I'm not reducing you to a caste, but there are questions ठीक being है. asked. I come about from a certain community. कम्युनिटी में कितनी डिसअपॉइंटमेंट है कि आपको मैदान में उतरने का मौका नहीं मिला? देखो कई चीज हैं, कम्युनिटी भी है, दूसरे सपोर्टर्स भी हैं, कई चीजें होती हैं इसमें. और बिकॉज मेरी भी हिस्ट्री है, मेरे फादर लेट दलबीर सिंह, उनकी भी हिस्ट्री है. जी. तो ये सब चीजें हैं. और मैंने खुद कहा था कि इस बार मैं स्टेट में जाकर काम करना चाहती हूँ. जी. तो कई बार लोगों ने ये भी पूछा, एंड वेदर यू गोइंग टू आस्क और नॉट, बट लेट मी पुट इट टू यू, कि फिर आपने लोकसभा कॉन्टेस्ट किया. सी लास्ट इलेक्शन आई हैड लॉस्ट इन 2019. लोकसभा इलेक्शन लड़ा था मैंने और हम सारे हारे थे. उसके फौरन बाद विधानसभा चुनाव आया. विधानसभा चुनाव में तब मुझे उससे महीना पहले पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया था. अगर मैं चाहती तो उस समय भी मैं कह सकती थी, एंड मे बी आई वाज इन अ बेटर पोजीशन देन एज पीसीसी प्रेसिडेंट, कि मुझे लड़ना है. राइट. स्टेट आफ्टर स्टेट होता है ये. कई बार हाईकमांड ना चाहते हुए भी कि पीसीसी प्रेसिडेंट्स को नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन तकरीबन अलाउ करते हैं. लेकिन मुझे उस समय लगा कि 1 महीना ही हुआ है, आई शुड डिवोट माई सेल्फ टू द पार्टी एंड टू द स्टेट. और इलेक्शन लड़वाने में मुझे अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, क्योंकि 1 महीने पहले ही मैं पीसीसी प्रेसिडेंट बनी. तो उस समय मैंने चुनाव नहीं लड़ा, ऑप्टेड आउट ऑफ कॉन्टेस्टिंग. लेकिन उसके बाद जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट भी रही, और नहीं मैं राज्यसभा में थी जी. और 19-20 में राज्यसभा की टर्म भी खत्म हो गई. उसके बाद काम करते रहे, पार्टी में काम करते रहे. यहाँ भी मुझे जिम्मेवारी मिली पीसीसी के बाद भी, तो पार्टी में काम करते रहे. तो जब अब, और मैं अंबाला से काम करती रही, क्योंकि लास्ट टाइम वहीं से मैंने चुनाव लड़ा था लोकसभा का. तो इस बार जब लोकसभा चुनाव आया, और मैंने उससे पहले ही कहा था कि मैं इस बार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हूँ, लोकसभा से पहले, कि स्टेट में जाना चाह रही हूँ, स्टेट में काम करना चाह रही You हूँ. said this before the Lok Sabha elections. Even Okay. before Lok Sabha elections, I had said this. I had made it very clear, openly, Okay. on public platforms I had said. और लेकिन फिर जब लोकसभा चुनाव आया, तो मुझे लगा कि क्योंकि अंबाला से चुनाव की बात थी, लेकिन सिरसा के लोगों की डिमांड आ गई कि सिरसा से सेल्जा चुनाव लड़े, और दैट वाज विंडिकेटेड आल्सो. राइट. लड़कर, क्योंकि बहुत ह्यूज मार्जिन से मुझे यहाँ लोगों ने जिताया, तो वो जीते. लेकिन तब भी मैंने कहा था कि मैं विधानसभा का क्लेम फिर भी रखूंगी. और उस समय जब 2019 था, 19 में कोई नहीं कहता था कि कांग्रेस डबल डिजिट में ज्यादा आ सकती है. सब कहते थे 10-15 के बीच में रह जाएगी, लेकिन हम 31 पे पहुंचे थे. आई एम जस्ट सेइंग दैट. लेकिन अब जब बात आई, तो मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना है. पर और लोकसभा अगर नहीं लड़ती, तो शायद बरखा जी को भी नहीं लगता कि सैलजा का जमीन पर कुछ है. You wanted to prove that you could. We always have to keep proving. Yeah. As a woman, you have to prove much more. As a woman, as a politician, as anyone. Do you feel cynical today? You know, you've been in politics as long as I've been in journalism. Yeah. Think I was in my 20s when I used to follow you on the campaign trail. मैं तब आपसे पूछती थी, are you a contender for chief minister? आज 2024 में मैं वही सवाल पूछ रही हूँ आपसे. कहीं लगता है कि मुझे मेरी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करने का मौका नहीं मिला. There is that cynicism that, and you're constantly having to fight. नहीं, काम करने का तो मौका मिला है. काम करने ऐसा का, नहीं कह सकती, because I've been 3 terms, 4 times I've taken oath, 3 terms I've been, I mean, I know, minister. I know. And I rose, you've grown with me. Yes. From we've grown older together. Together, yes. From deputy minister to minister of state, to minister of state independent charge, to cabinet minister.
So I can't say, that journey has been there, but I have seen कि स्टेट में भी लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है, स्टेट में भी लोगों के काम करने का एक अलग ढंग है, जी जो बिल्कुल लोगों के एज एमपी एक अलग आपका दायरा होता है, एज एमएलए नीचे जमीन पर आप कुछ और तरह से काम कर सकते हैं. तो मुझे लगा कि अब इतना लंबा अरसा यहाँ करने के बाद आई आई कैन, एंड एट दिस लेवल ऑफ सीनियोरिटी आई डेंट थिंक कि इस तरह की बात कोई ऐसा मेरे साथ कर देगा. तो थोड़ा cynicism, yes, it's natural, yeah and disappointment absolutely होता है, but we have to move forward, or I'm still there and I will be there. Suppose the Congress wins, you जी. are not chief minister, जी. Mr. Hooda is chief minister. Suppose इसमें बहुत ifs है, इसमें बहुत ifs है. Will you remain with the Congress party? देखो बात, my remaining in the Congress party has got nothing to do with any other factor Okay. except my own commitment to my party and my ideology. So irrespective of how disappointed or cynical So, you feel, I'm you not, will not join the BJP. As I said, that I'm not even considering that somebody else becomes or who becomes or what. I have been through many extreme circumstances throughout my political life, but it never occurred to me that I should leave the party or look for some other pastures. My father never left the party. Yeah. So we are very proud of that. Yeah. Some people may not consider it, but I consider it myself. What do you say about a leader who returned to the Congress 1 hour after he was addressing a BJP rally? I don't want to comment on that. Because ठीक है, जो भी है, I can't what did you say. make of that development, Ashok Tawar coming back? Ashok Tawar जी की घर वापसी. उस पर मैं क्या बोलूं? पर थोड़ा लगता नहीं कि ridiculous है. अपना अब उनका एक पुराना क्लिप वायरल है जहां वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कहते हैं मुझे भी मास्टर ने सिखा दिया कि संविधान खतरे में है. अब वो वापस आपकी पार्टी में आ गए. those people were saying कि एक दिन पहले ही या सुबह ही कर रहे थे. जी. I don't know. That's for the party to see. Why should I make anything personal? But irrespective of cynicism and disappointment, आप कांग्रेस के साथ कमिटेड रहेंगी. कुछ भी मेरा चेहरा क्या कह रहा है आपको? डिसअपॉइंटमेंट और सिनिसिज्म दिखा रहा है क्या? आपका चेहरा is the चेहरा of someone who has seen a lot in life. मैं उस चेहरे को पहचानती हूँ. बस है ना? पर मुझे ये बताइए कि पॉलिटिकल सर्कल्स में एक चर्चा है, मे बी यू कैन हेल्प मी एंड टेल मी कि ये सच है कि अच्छा, चर्चा ये है that Bhupinder Hooda and his son and his camp, if I can call it that, would not want a clear sweep for the Congress in Haryana because their own leverage would come from a majority but not an absolute majority. Do you agree with this charcha in political circles? I think you'll have to ask them that and not me. Okay. If the Congress wins, who should get the credit? Here I'm very clear. Let me tell you. Without any... There are two factors why we are winning the state. Number one, and this was so in 2014 also when we lost the state. Yeah. There are always two factors. One is that 10 years of BJP, and they haven't exactly shown in those 10 years. They've made blunders. They have not connected with the people. Yeah. They have taken such decisions which have made life miserable and more difficult for the citizens. Let me not get into the Kisan, the Berozgari, these are issues. Yeah. These are issues which are there, very much there, staring at everybody in the face. So it was all together, number one, against BJP. Lot of, so it's a negative vote against the number BJP. One, is one factor. Two factors. Okay. So one major factor is negative. Second factor, I would say is, and please listen to me carefully on this. Second factor, I would say that, see, हम state में काम करते रहते हैं. Any state, the party works. Whether you call it, groups हैं और हैं, but you're working.
you're working in the name Yeah. of the party, you're working. But there has to be some catalyst which raises you above that mundane, To the हमने next rally level. की और ये किया. That came in the form of Rahul ji's yatra. When he did the Pad Yatra, that was the time when all of us actually, the whole state, Congress people, they got together, and it gave us a different energy. And it also gave a different perspective to the people of Haryana. So that worked. And then, of course, there were incidents, there were things and all, but that is the main factor, I would say. And then of course, also after the this previous period, where Rahul ji has actually shown at the national level also. So all these things were there that created the environment. Without an environment, just dharna, julus and all does not help. They are complementary, but there has to be a catalyst. So if the Congress wins, the two factors are huge anger with the BJP, according to you, Absolutely. and Rahul Gandhi's yatra serving as a catalyst, plus Yes. the improvement in his own image. Absolutely. अगर कांग्रेस हारती है तो फिर किसको दोष देंगे? तो फिर देखो इसका फिर राहुल गांधी को दोष नहीं देंगे आप? No, again, let's not ridicule this. I'm not ridiculing. I'm asking a genuine question. Yeah, हारती नहीं है, number one. Okay. Number one, हारती नहीं है, absolutely not. कहीं अगर कमजोरी आती है तो इसका मतलब है लोकल लेवल पे हमने कुछ ना कुछ गेम्स खेल ली होंगी. लोकल लेवल पे तो गेम्स हुई हैं. तो मतलब वो नतीजे में see people are ready to vote for Congress. Yeah. That is there. अगर कहीं ना कहीं है तो गेम्स. आपने कई बार कहा है कि आप बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सोना है. मैंने कहा नहीं है. आप मानी जाती हैं. चलिए, जैसे मैंने कहा कि आपके मन में जो होता है आप बोल देती हैं. ये जो गेम्स लोकल लेवल्स पे शायद हुई हैं और हर पार्टी में होती है, मैं ये नहीं कहती ये सिर्फ कांग्रेस में. ये गेम्स को लेके नुकसान क्या हुआ है? क्योंकि आपने कैंडिडेट, आई थिंक समवेयर आई वाज रीडिंग यू सेड दैट द कैंडिडेट सिलेक्शन कुड हैव बीन बेटर. See, after this election, I have not said that. Yeah. I said it before this election, referring to the Lok Sabha. I see. After this election, I've kept quiet on the subject. It's But only today when how you're was the saying candidate about selection this time? disappointment and all. Yeah. Let me, elections are on tomorrow. Yeah. Voting is tomorrow. I don't want to say anything which would, in the remotest way be interpreted in any other. Let me ask you in the end, the headlines are full of a meeting that apparently you had with Sonia Gandhi. To the best of my knowledge, it was with Rahul Gandhi ji. Yes. What significance should we impart? मतलब बिल्कुल चुनाव से पहले जहां माना जा रहा है कि शैलजा जी थोड़ी सी नाराज हैं, आप राहुल जी से मिलते हैं. Can you share with us what happened? No, I can share some. Now, actually, I wouldn't even have said that I met. It was only that there was media waiting outside. I've had other meetings also without the media knowing that because we meet off and on, whether it's with Madam, whether it's with Rahul ji, whether it's with Priyanka ji, you don't go public on that कि हम मिल रहे हैं. I mean, it's hardly an event because they are leaders and we go and meet them. And they also meet us. So this goes on. Yesterday, media was there outside, some cameras were there. So they saw me and they said meeting. I said, they thought Sonia ji se hui hai, but let me be straight on that since you people do know that I was there. So it was with Rahul ji, but we discussed many issues. Election से पहले होता ही है, election हो रहा है, feedback चाहिए, कुछ अपना perspective चाहिए. आपको बोला क्या कि आप बहुत ज्यादा plain spoken हैं? थोड़ा कम बोलिए. No. You have smiled through many of my very provocative questions. And you have smiled through this period when you have felt disappointed. What keeps you smiling? I take it in my stride, I feel I'm in politics and then you can't have this sensex kind of thing going up and down. You have to maintain an equilibrium, a balance, and because these situations are bound to come. And if I don't take it in my stride, what am I trying to show to our people, within the party? Because सबके साथ हुआ है, कितनों के साथ नहीं हुआ. It's like that.
So we have to keep it going. And हरियाणा में हमारे कहते हैं जब ओखली में सिर दे दिया तो फिर मुसलों से क्या डरना है. तो अब ठीक है, मुसल पढ़ते हैं, पढ़ेंगे, but at some point we have to give it back as good as we get, and that I'm saying as a woman. And I was going to end with that question, that as a woman, as a Dalit, you are having to fight definitely more hard than men and men from other castes. ये तो सच्चाई है, मतलब ये इसमें दो राय नहीं हो सकती. किसी भी पार्टी की किसी भी औरत से आप बात करें तो वो आपको यही कहेंगे. And hence, and this is not just true for politics, ये media में भी सच है. I was going to say that. It's true for all. I'm sure you've also faced 100%. And I am fighting all the time. All the time you're fighting, right? And it is exhausting. But that is my question to you. As a woman, to maintain that even keel, when you're having to fight much harder, when it's much more exhausting, थक भी जाता है एक इंसान, औरत हो या आदमी हो. अगर मैं आपसे पूछूं कि चुनाव के बाद एक चीज से खुशी मिले कि आप जीते, आपकी पार्टी जीते, और एक चीज से निराशा मिले अगर आप मुख्यमंत्री ना बन पाए, ये जो स्माइल है आपकी शक्ल पे, ये क्या मुझे 8 तारीख को भी देखने को मिलेगी? I'm not walking that path, what you're saying, of negativity. कि मिलेगा नहीं मिलेगा. I'm an optimist. So you still believe that on the 8th evening, you could be the chief minister of Haryana? See, that is for the high command to see What do you who all feel? are there. So I'm also there. You haven't written yourself out of the script. So I haven't left politics, have I? my politics is not like that. I've worked hard. And maybe I've worked harder than so many others. Yes. So, I mean, we're there. Interesting. It's for the high command to see. You see, I've always maintained that. It's for the high command to see. It's for the high command to, and I always say that leader, it takes a long time for a leader to develop. Anyone, woman, man, anyone. Takes a minute to finish them off, which is sometimes people don't realize. And maybe in any other organization also. It takes a minute to finish them. So I think it's for the betterment of any organization that they nurture the people. Sometimes, of course, the personal ambition or over-ambition may overtake, and that may be anybody's flaw. And ambition is not a bad thing per se. Ambition is not bad. Yes. Over-ambition sometimes may be counterproductive for some. So this is all part of our life. It comes with the turf. Let's take it like that. And one always has to move forward, I believe. If you look back, then, it's full of good, it's bad. I mean, then you can't keep dwelling on that. But at the moment, you're still optimistic about your role. See, we are all working hard. We've all worked hard, and let us see what High Command decides. Aspirations are always there. How can you leave your aspirations behind? And it's not just personal Selja's aspiration. It's aspiration of so many people. Who would want to see you as chief minister? Why would they not want that? I mean, there's so many who would want. They would want to change. They would want a different kind of a leadership, and they would. I mean, there's a section of people who would want that, won't they? Good luck to you. I think it'll be very interesting to talk to you on the 8th evening or the 9th morning. Yeah, we can talk. We can talk anytime. Not an issue. All the best. Thank you. Thank you, Barkha. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.